kitchen. So today we are making our makki ka gobi prantha. So I use gloves. So this is up to you how you do. So I grated 1 cup for gobi. I put it in makki ka atta here. And I like to use spinach in it. So I chopped spinach and just adding that one here. And then cilantro, chopped cilantro in it. So I have mixed ginger, a grated ginger, and chopped green chili. So it depends on whatever your taste is. So, but that really looks very yummy in the gobi prantha. So now we will be adding some salt, some red chili powder if you want, and some coriander and jeera powder. So just mix it, and also add some chaat masala. I like chatpata and yummy one, so I added that one, and mix it properly. So I have boiled the water already here. So this one, the water is already boiled. So I will be putting little by little and then keep on mixing it. So put little by little. कई बार आती है कंप्लेन कि हमसे मक्की का रोटी जो है वो अच्छी से नहीं बनती. So then what I do, like just mix it properly. That's why I use glove, because it's very hot water, so that it is easy in this way. So to mix it and hot water. Some more. So mix it as much as you can. जितने अच्छे से आप इसको आटे को गूंदोगे उतना ही अच्छा आपका वो बनेगा. और आटा पानी हमने गर्म पानी इसमें धीरे धीरे ऐड करते ही जाना है. सो इट डिपेंड्स, ईच मक्की का आटा इज डिफरेंट. किसी में पानी ज्यादा लगता है, किसी में कम. तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के देखते रहो कि आपके कितना पानी इसमें डलेगा, तो उस हिसाब से डालते रहो. Add some more water. So now I have added some more water in it, and see, it is coming up as a dough, if you see, right? But it's better if you just knead it as much as you can. अगर आपको रोटी बहुत अच्छे से चाहिए, पतली पतली मक्की की रोटी चाहिए बढ़िया सी, तो उसको जितना आप नीड करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा. बस इसको गूंदना बहुत अच्छे से है. इसमें मेन जो है वो है गूंदने की तरीका, कि आप कैसे उसको नीड कर रहे हैं. तो इस तरह से प्रॉपरली आप करते जाइए. मेरे को ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में इसी पे लगाती हूँ. तो ये देखिए कि आप ना कैसे एक इकट्ठा होके आ रहा है गूंदा हुआ आटा, राइट? तो इस तरह से 5 मिनट हो गए मुझे ऐसे ही गूंदते हुए. अगर आपको लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ड्रॉप करके डालते रहिए, पर इस तरह से आटा आप ना गूंद लीजिए. उसके बाद अब हम इसका कैसे करेंगे. अब देखो एक तरफ इकट्ठा हो गया पूरा, कि कैसे अच्छे से इकट्ठा हो रहा है. तो इट मीन्स आपका आटा अब अच्छे से रेडी है. सो टेक लिटिल बिट इन योर हैंड लाइक दिस, मेक अ बॉल. सो डिफरेंट वेज टू मेक. कई लोग सिर्फ हाथ पे बनाते हैं, आप हाथ पे भी बना सकते हैं, और इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं. थोड़ा सा पानी वाले हाथ से बना सकते हैं, या थोड़ा सा आटा ऊपर डाल के. अब आपकी मर्जी है कि आपने मक्की का आटा थोड़ा सा डालना है या फिर दूसरा आटा. ओके, सो इस तरह से करते थोड़ा थोड़ा आप ऐसे यूज कर सकते हैं नीचे आटा लगाते हुए. सो धीरे धीरे इसको ऐसे करते हैं. देखिए रोटी अपने आप ही गोल बन रही है. आटा अच्छे से गूंदा हुआ है तो कोई टूट भी नहीं रही, तो अच्छे से गोल गोल रोटी बन रही है पूरी, और कोई खराब नहीं हो रही कुछ भी. आपको मोटी रखनी आप रख सकते हैं, पर आई रियली लाइक कि मक्की की रोटी भी कनक की तरह से पतली पतली हो. थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे आटा डालते जाइए, उसके ऊपर ऐसे बनाते जाइए. सो इट्स कीप ऑन गोइंग, राइट? तो और साथ में तवा अपना एक ऑन कर लीजिए.
So now I have changed the side for this one. So it is still cooking, right? So you can let it cook. You can use 2 tawas if you want, right? So and then use one for the thing. So what I'm going to do, I'm putting this one here so that the other side will be cooked, and going to put our makki ki roti again on this one. So in this way, like 2 rotis can be cooked together. So this roti is ready, right? So you can serve it with dahi, butter, whatever you want. So मक्की की रोटी with butter and dahi, it's ready to eat. आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं. And thank you for watching the video. And if you need more recipes, then please go on rimpiesindocanadiankitchen.com and check out the recipes. If you need anything, any kind of recipe, then please leave a comment. Thank you so much for watching the video.